एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन बोला ना मैंने, एंथैल्पी चेंज। Okay. Moving on to the next topic of this chapter, which is the very basis of this chapter, which is kinetic molecular theory. Okay. Kinetic molecular theory lets us to understand how particles work. ठीक हो क्या? Brownian was a scientist which was experimenting on something and accidentally he threw few of the pollen grains into the water. ठीक हो गया? To his surprise, the pollen grains were continuously moving as if they were alive. When he studied it under a microscope, when he studied this under the microscope, he get to know that it's basically the water molecules which are continuously colliding with the pollen grains. And this movement of pollen grains basically naked eye से वो जो water molecules हैं, water molecules जो होते हैं, 2 minutes थोड़ा बचना होगा. They are invisible to the naked eye. So through water molecules, through pollen grains, we were able to get to know that it's basically the water molecules which are in a continuous state of movement and they are colliding with each other and with the pollen grains and with the walls of the container. And upon their collision, the movement of the pollen grain is showing that the waters are on a continuous state of matter. Then he performed an experiment. It's the actual accidental experiment कौन सा था? Which was by accident. It was with pollen grain and water. ये हाइड्रोजन ये क्या ठीक है, जो उसका properly arranged experiment था, that was with smoke particle. He took a container. Smoke particle से मुराद है soot, which is the जो black सा material, जब आग जलाते हैं तो एक black सा वो flaky सा material in the air we see ना, he used that. ठीक है, उसने उसको कंटेनर में put किया, उसको enclose कर दिया and put this under a microscope and light just to see inside of the container na? There were tiny specks of light which are basically the smoke particles. Smoke particle which were moving so with which were moving across the container. From this experiment, we came to know that air particles or gas particles, like the water particles, move freely across the medium. अब इसकी बेसिस पे जो हमारी क्या कहते हैं उसको
the points which we wrote due to this Brownian motion, पहला point था. Am I clear up till now, Fatma bete? ये water, air molecules and pollen grains का experiment समझ में आ गया, because इसकी theory as it is exams में आती है. I would show you from the book as well कि ये theory exactly कहाँ पे लिखी है, but do you get the meaning of it? What these two experiments are for? Can I go? Yes. Can I go further now? Yes. Okay. According to kinetic particle theory, everything is made up of small particles called atoms, which cannot be subdivided. So इसको 6 कर दीजिए, 6 writing. Thank you. Second point था, particles are in a continuous state of motion. They collide with each other and change their direction upon everything. अब ये कंटेनर है मेरे पास. आपको मोमेंटम का पता है? मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम. The body possessed by velocity and mass. शाबाश. So प्रोडक्ट. So अब ऑब्वियसली अगर हम एक पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, दिस पार्टिकल हैव मास, दिस पार्टिकल हैज वेलोसिटी. सो अपॉन एवरी कोलिजन चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारे पास, ठीक है. And why the change of momentum we're discussing? Because upon every collision, direction of the particle changes across the medium. Also, we discuss pressure as well. Pressure is defined as force per unit area. ठीक हो गया? And force हमारे पास किसके इक्वल होती है? Rate of change of momentum की इक्वल होती है. So upon every collision, the particles apply force on each other upon collision only. एक और चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि एटम्स जो स्टेट्स के अंदर एटम्स होते हैं ना, they do not apply force on each other until unless they come in contact with each other. For example, if two particles are sitting very close to each other, although ये कभी भी rest position में नहीं आएंगे, they would never be in rest position, but if there is a point where they're very close to each other, they would not apply any force on each other until unless they collide with each other या किसी तरह एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में. दैट इज द थ्योरी जो हमें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. पहला कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड. सेकंड के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस. सॉलिड में हमने पढ़ा कि उनकी वाइब्रेशनल मोशन होगी, लिक्विड एंड गैस में दे कुड मूव फ्रीली. ब्राउनियन के एक्सपेरिमेंट अंडर द माइक्रोस्कोप हमें पता लगा, जो जस्टिफाई भी हुई काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, के पोलन ग्रेन्स एंड स्मोक के पार्टिकल्स की मूवमेंट बेसिकली खुद से नहीं थी, बल्कि एयर के पार्टिकल्स एंड वाटर के पार्टिकल्स उनके साथ कोलाइड कर रहे थे, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. तो जब हमने उनको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, सो वी केम टू नो कि वाटर and air particles are continuously in a state of in motion, and upon every collision they change their direction. So that's what Brownian motion and kinetic particle theory is associated with each other. Okay. Escape of water particles into air at fixed temperature is boiling. ठीक हो गया.
सेकेंड पॉइंट है हमारे पास evaporation occurs only at the surface and this occurs throughout the liquid. Then the third point is evaporation causes cooling because the particles with enough kinetic energy leaves the surface, leaving behind low energy particles. So जब low energy particles होते हैं, हमने previously discuss किया है, kinetic energy is proportional to temperature. If kinetic energy is bigger, this means if temperature is bigger, kinetic energy is bigger. If temperature is low, kinetic energy of the molecules भी क्या होगी? Lesser होगी. ठीक हो गया? So जब high energy particles surface को leave कर जाते हैं, leaving behind low energy particles, so temperature of the system decreases. So normally whenever we get out of the swimming pool या हम नहा के आते हैं या हमें पसीना आया होता है और हम हवा के नीचे आते हैं, so we feel cold because the particles from our body leaves because of the air or whatsoever the temperature difference is. So lesser particles with lesser kinetic, so lesser particles with lesser kinetic energy causes the body temperature to decrease. ठीक हो गया? उसके बाद जो boiling है, if it's short the liquid and bubbles produce होता है, bubbling होती है इसके अंदर जब boiling हमारे पास होती है और ये fixed temperature पे होती है. अब rate of evaporation depends on following points. Temperature के साथ direct relationship है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो evaporation rate भी इंक्रीज होगा. if surface area increases के साथ डायरेक्ट अगेन होगा उसका कि अगर surface area बिगर तो यानी अगर एक इतना कंटेनर है और एक ऐसा कंटेनर है तो evaporation किस में ज्यादा होगी? वन के अंदर. ठीक है, क्योंकि उसका surface area था. Then comes the point, surface area के बाद हमारे पास point आता है डेप्थ का. डेप्थ के साथ उसका इनवर्स रिलेशनशिप का. अब अगेन इसमें किसमें इवेपोरेशन फास्टर होगी? यहाँ पे हम लिख देते हैं. आर यू देयर बेटे? Yes. आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? हाँ जी. evaporation is faster in shallower areas. Deeper areas में evaporation rate जो है वो decrease हो जाता है. And then last point is drought. And I also add humidity as well, because अगर humidity ज्यादा होगा तो evaporation rate क्या होगा? Lesser होगा. Similarly drought होता है air presence of air, sudden blow of air. So if there is air present, evaporation rate automatically क्या हो जाएगा? उसकी वजह से increase हो जाएगा. Kinetic energy and temperature का आपस में direct relationship होता है. That is, if temperature of the system increases, so does the kinetic energy of the. ठीक हो गया? And if kinetic energy is bigger, this means temperature is proportional to kinetic energy is proportional to internal. इंटरनल एनर्जी हमने बिल्कुल स्टार्ट में रिव्यू किया था कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है.
Are we clear up to this point, Peter? हाँ जी. Let me walk you through the book. क्या हमने कौन से अच्छा ब्राउनियन मोशन के बारे में जब भी बात होगी हमारे पास, ये देखो माइक्रोस्कोप, कंटेनर एंड स्मोक पार्टिकल्स एंड दिस, और लाइट के अंदर दिस अपीयर्स एज टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट. ये डायग्राम अक्सर क्वेश्चन के अंदर आ जाती है. आपको ब्राउनियन मोशन हमें शो करना होता है. इट इज द हैपहैज़र्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द सरफेस. ठीक है, या सिस्टम के अंदर जो हैपहैज़र्ड मूवमेंट होती है, अक्सर एग्जामिनर जो है डिमांड करता है कि टू ड्रॉ समथिंग, तो हम लोग ब्राउनियन मोशन को हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे. एक पार्टिकल ले लेंगे, तो पार्टिकल की मोशन जो है हमारे पास, एक पार्टिकल ले लेंगे, उसकी मूवमेंट हम ऐसे शो करते हैं, रैंडम मूवमेंट. इतना मोटा कैसे हो गया? ठीक है, सो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द मीडियम एज ब्राउनियन मोशन. ये डिफ्यूजन का पॉइंट डिस्कस हुए हैं कि हॉटर वाटर के अंदर डिफ्यूजन रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू द कूलर वाटर. एंड अगेन द रीजन इज कि जो हॉटर पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो सोल्यूशन